Yeah, hi all. Can everyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll quickly start again. Okay. So can anyone tell me, guys, what is Java? Okay. Focusing in detail about all the object-oriented programming concepts again. But what is Java and why should we means how do we write the code in Java? See, first of all, I'll tell you very basic thing, guys. What are the basic requirements in order to write the code, Java code, and execute the code in your machine? So the very basic requirements are what? So we need the JDK installed in our machine. So what is JDK, guys? JDK is simple, Java Development Kit. Java Development Kit means what? So whichever the things those are required in order to execute your Java code, all the library, Java code or Java virtual machine. So now you don't know about those things, no need to worry at all. So as of now, just simply understand one thing. If you want to execute your Java code, so which thing must be installed in your machine, guys? JDK. Simple. Can we write and execute? Can we execute our Java code, guys, without using JDK? Tell me. No. Without JDK, we cannot execute our Java code. Now the second thing, where we can write our Java code. Okay, कुठे कुठे लिहू शकतो आपण Java code. So meanwhile, I'll do VS one thing, Code, guys. I'll be using Notepad. Hindi. Okay, so Oh, notepad. कहाँ कहाँ पे हम Java code लिख सकते हैं? So basically, we can write the Java code in Notepad. Very good. दूसरा कहाँ पे लिख सकते हैं हम Java code? VS, Tell me. VS Eclipse. Coder. Okay, VS Code एकदम सही. और कहाँ पे लिख सकते Eclipse. हैं हम? Let's somebody would say this Visual Studio. Correct. We can write a Java code in Visual Studio as well. Have you guys heard about Eclipse? Yes, sir. We Yes, can sir. write our Java code. Yes. We can write Yes, sir. and execute our Java code in Eclipse as well. Very good. Okay. Can we write and execute our Java code by using NetBeans IDE, guys? Yes, sir. Tell Yes. me. Yes, sir. So this is again an IDE, right? Can we write and execute our Java code, guys, in Notepad plus plus? Right? Yes. We Yes. can execute. Can we write and execute our code by guys by using Sublime Editor? Yes. So no need to worry at all, guys. There would be n number of editors are there in market. Okay, n number of editors. But which IDE we are going to use, guys, in order to write and develop our Java code? So we are going to use IntelliJ. So you must be thinking, why am I using an IntelliJ here? Okay. So you guys also will be realized later. Okay, why am I using an IntelliJ? But for now, I'm telling you one thing. So in industry, most of the people are using. Industry uses it. Okay. Industry means which industry, guys? The Java developers in organization, in companies, in your language, Java developers uses the IntelliJ idea. Okay. So now tell me, guys, one simple question I'll use. Okay, I'll ask you. If I will have only IntelliJ idea in my machine and I don't have the JDK, can I execute my Java code? Tell me. No. No, sir. No, No. no, correct. If I'll have, let's say, I have IntelliJ IDEA and Eclipse, but I don't have the JDK, can I execute my Java code? No, sir. No. Tell me. No. No, No, sir. it means this is mandatory. This is the mandatory thing that must be installed in your Java machine. That must be installed. Just download किया, PC में रख लिया, काम चलेगा क्या? No. It must be downloaded and installed. And install करने के बाद भी you need to set the path. So which things are important, guys? You need to install JDK plus you need to set the path. तो हम देखेंगे कि JDK का path कैसे हम JDK कैसे हम install कर सकते हैं and how can we set the JDK path. Second thing, we'll quickly see how can we install the IntelliJ IDEA, and then we can easily see, guys, how can we write our first Java code. Okay, are you guys interested now? Are you guys excited? Okay, it is very Yes. easy, guys. Yes. Okay, even before Yes, joining sir. Infianet, you must be thinking actually this must be quite difficult. Okay, but this is not difficult at all. If you guys will be there with me, if you guys will follow my instructions, then definitely it will be very easy for you guys. Okay, writing Java code using this IntelliJ idea,
and for the next 6 weeks, guys, whichever the things that I will ask you to follow, because I'm going to do one thing, guys. I will make you clear these things, okay? Every week I will give you an assignments, okay? You need to complete those assignments and you need to push your assignments to Git and GitHub, okay? So again, this verse you guys must be hearing for the first time. I'll tell you about this thing as well, how to install the Git and GitHub and how to set up. So every single thing I'll tell you guys, because you guys are the beginners, right? But it's time to see about the JDK हमें क्यों चाहिए guys? If you want to execute your Java code, you need to have a JDK. तो JDK क्या होता है? Inside JDK there are so many other things as well, but I'll explain you those things later. Okay? Why am I not telling you all those things now? Because even if I'll tell you all these things now, guys, okay, so it will be like अभी के लिए इतना समझो कि JDK is mandatory to execute the Java code. अगर JDK नहीं है हमारे पास, so can we execute our Java code, guys? No, we cannot execute the Java code in our machine without JDK. Okay, so you guys will say like I will go on a browser and I will execute my Java code. Okay, so that is the different thing. But अगर आपको आपके machine में locally if you want to execute any Java code, you must have a JDK. Okay, let's say अगर किसी को लग रहा है guys कि मेरे पास तो JDK था, शायद मैंने install कर लिया है, and then how can you check that the install JDK? So simply you need to open the command prompt, and there is one command you need to write here. Just write Java. Okay, no need to write anything. Okay, अगर आपके पास Java JDK installed है, so you will get something like this. अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, still no need to worry at all. There is one command, guys. Java version is the command. Okay, ये आपको बताएगा which version is installed in your machine. Which version of Java is installed in your machine. अगर ये Java मेरे machine में install नहीं होता, then it would have given me something else. Okay, it would have given me Java is unrecognized command. तो ये यहाँ पे मुझे क्या देता guys? ये यहाँ पे मुझे error देता, right? So JDK अभी बताओ मुझे, it is telling me the Java version as a 21. So JDK installed in my machine, guys, or not? JDK install है कि नहीं मेरे machine में? Tell me. Yes. Guys, Yes, sir. okay. So everybody must have the JDK install. अभी बहुत easily, guys, I will show you how to install the JDK. Okay. So the very first thing we'll just see, guys, कि install कैसे करेंगे. Later we'll just see how to set the path. तो अभी let's say मेरा जो भी path set हुआ है, so I'll do one thing. Okay, otherwise I will do everything in front of you guys. अभी मुझे बताओ, अगर मैंने सिर्फ JDK install किया, okay, सिर्फ JDK install किया, path set नहीं किया, तो क्या मैं मेरा कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ गाइस? टेल मी. No, sir. नहीं होगा. No, sir. एक्चुअली देयर इज वन वे गाइस. ओके, बट अभी के लिए इतना समझो कि सेटिंग पाथ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, देयर इज वन वे एक्चुअली थ्रू व्हिच वी कैन एग्जीक्यूट द जावा कोड विदाउट इवन सेटिंग द पाथ एज वेल, बट वो एक वे एक्चुअली दैट इवन नॉट नेसेसरी फॉर अस, बिकॉज वो लोकेशन पे जाके वहां पे हमें कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट actually that is not even useful for us and not even recommended. Okay, so जब भी आप install करोगे JDK, always recommended to set the Java path. Okay, JDK path. तो JDK कैसे install करना है guys? You need to simply make a Google request, guys. JDK download. Okay, you can write down the steps, or else I will share you the link directly, guys. Okay, so simply make a Google request, JDK download. आपके पास Oracle का एक link आएगा. So that is the officially Java is owned by Oracle. See, while covering all the things, guys, my mostly focused on covering the practical approach, guys. Okay, because these theoretical things even we haven't gone through. Okay, so means इतना हम इसको देखते नहीं है actually theory. So we will be focusing on practical things as much as possible. Okay, theory जितना मुझे पता है directly I will follow. I will create PPTs as well for you guys so that I can follow the PPTs, so that I will not miss any point. Okay, तो PPT मुझे क्यों बनानी है? So that I will not miss any point. Otherwise I can cover the things like this as well. Okay, because directly I can open these things, install and write the code. Okay, आपको JDK 21 download करना है, because if you will see here, okay, JDK 21 is the latest long term support release. Okay, ये एक long term, ऐसा समझो कि this is the stable version. Okay, अभी मैं आपको अगर कोई भी वर्ड्स यूज करूंगा, those words you guys won't understand. तो अभी के लिए इतना समझो कि JDK 21 is the long term support JDK version, क्योंकि एक नया आया है वर्जन, that is the JDK 24,
but we won't be using that. Okay, so jdk 24 अगर आपको jdk 21 if you want to download and install this particular link I will be sharing with you. If I will share this link with you, simply you need to open that link. आप directly वो page पे चले जाओगे. Okay, say directly you guys will land to that page. You no need to take the extra efforts, but later you guys also should be able to download such a software from any site. Okay, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ that jdk 21, why are we going to install jdk 21? Tell me, why aren't we going with the jdk 24? Because jdk 21 is the providing us the long term support. You can say it is a stable version as of now. Okay, और jdk अगर मुझे jdk क्यों चाहिए guys, tell me, to write and execute the java code. ये आपको आना ही चाहिए. You must be thinking, why am I repeating these things again and again? Okay, because this is really very important, guys. Okay, if you'll try to write your java code just by installing the IntelliJ IDEA, you must be writing end up every single thing very correct. Okay, अगर आप पूरा correct भी code लिखोगे and if you'll try to execute your code, still you will end up facing the issues. And the reason you will come to know that jdk must be there. Okay, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, jdk 21 अगर मुझे डाउनलोड करना है, so you guys must be using linux operating system, mac or windows, anything. Accordingly you need to choose. So in my machine I have windows, so यहाँ पे मैं जाऊंगा and this exe file I will be downloading. तो आपको भी कौन सा फाइल डाउनलोड करना है guys? Okay, so obviously if you'll download this and this thing also will work, but we are going to just going with the straight approach, guys. Okay, आपको यहाँ पे exe file download करना है and this exe file will be downloading at any location, any given location. So I'm downloading this one. You can see guys, यहाँ पे अगर आप location देखते java का version देखते हो 21.0.6. so maybe the version जो मैं download कर रहा हूँ अभी, so minor updates हुए होंगे उसमें. So maybe I will get the latest version. So अभी हम देखते हैं. By the time it is downloading, guys, one more thing that I told you guys. Okay, अगर हमें JDK चाहिए, JDK क्यों चाहिए? JDK will execute your Java code, right? But JDK के साथ और एक चीज चाहिए हमें, and what is that thing, guys? One editor चाहिए, right? तो आपको कोड भी तो लिखना है ना, so JDK के अंदर थोड़ी लिखोगे, so you need one editor as well. So there are n number of editors are there in market. मान लो 1000 editors है, फिर भी हम ये क्यों choose कर रहे हैं IntelliJ? Because in industry, guys, the IntelliJ IDEA is being used. IntelliJ IDEA is recommended. Why it is recommended? Because IntelliJ IDEA जो features provide करता है, guys. Okay, once you will become habitual, आपको realize होगा. मैं notepad में लिख के भी आपको दिखा सकता हूँ how can you write your code and execute your code, but an IntelliJ IDEA में भी आपको दिखाऊंगा and you guys will realize कि कौन सा easy है, कौन सा आपको effortlessly code write करने में help करेगा. So that time you will realize why are we going with this. अगर आपको single code एक मतलब एक ही क्लास का कोड लिखना है, दो क्लास का लिखना है, then obviously notepad में आप लिख सकते हो, practice कर सकते हो, because during interviews also they will ask you to share your screen, open the notepad, and in notepad they might ask you to write the code. Okay, और IntelliJ में क्या बेनिफिट मिलेगा ये आपको दिख ही जाएगा. You guys will realize that. Okay, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है guys, I will do one more thing. Okay, so ये पहले से ही डाउनलोड है guys मेरे पास, तो I will try to tell you how can you write the simple Java code. Okay, simple hello world program आप कैसे लिख सकते हो in Java, I'll tell you. Okay, I am creating here one folder for you guys. Okay, you no need to write anything from this. I will be sharing you with the GitHub. अगर GitHub क्या है आपको अगर देखना है, you can visit this github.com and my profile, guys. So GitHub क्या है? It means whichever the code that I write. Okay, अभी तक के लिए ऐसे समझो कि this is something called this is the Instagram or the Facebook of the code. आपका पास जो भी कोड है यहाँ पे हम जो भी लेट्स से अगर आप कोई इमेज पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, राइट, हम इसको क्या बोलेंगे? इमेज, कोई स्टोरी या वीडियो जो भी पोस्ट करते हो आप उसको पोस्ट बोलते हो, राइट? पोस्ट और समथिंग दैट यू कॉल. ओके, बट हियर वी कॉल इट एज अ रिपोजिटरी. तो जो भी मैं कोड लिखूंगा गाइस, आई विल पुश दैट कोड एज अ रिपोजिटरी हियर. आपको यहाँ से डाउनलोड करना है दैट कोड एंड यू कैन जस्ट मींस you can download this code and you can just get that code directly into your IDE. I will tell you those ways also, guys. Okay, very easy ways are there. And okay, तब तक के लिए हम क्या करते हैं? We'll start writing the simple Java code. Do you guys know about class? I was supposed to create a
folder for you. Okay, here I am going to create a folder, guys. Sorry. So why am I creating one folder, guys? So in that folder your code will be separate, guys. Okay, so Infinite Java. So this is the folder. इसके अंदर मैं मेरा कोड लिखूंगा, right? तो अभी मैं क्या करता हूँ, let's say here I am writing one class. I know actually most of you guys know about Java. So I'll do one thing here. Let's say I'm writing a class. Class name is Hello Test. Is it correct, guys? Every see at least 50% of you guys know about Java, right? Can anyone tell me जो मैंने लिखा है ये correct है? अब मुझे क्या करना होता है, guys? Tell me. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं मेरा class name dot java. I will save my code with the class name dot java. अभी मैं save कर रहा हूँ. Let's see. See, simply I have saved my code with the dot java extension. यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल. अभी मेरा एक क्वेश्चन है, whoever is knowing the Java, okay, you guys will really have interest in this, okay? Because अभी मुझे बताओ, ये जो भी मैंने कोड लिखा है, ये कोड कंपाइल होगा क्या, guys? Will I be able to compile this code? Okay, No. बता. No, sir. अभी okay, anyone, सब लोग बताओ मुझे जिस ये कंपाइल नहीं होगा, बता रहे हो आप, right? Okay, can anyone tell me, guys, what is the command to compile the Java code? इसके अंदर सर मेन मेथड Java. नहीं है. Yeah, okay. So, okay, we'll come to that point. Java C class name dot java is the command if you want to execute your Java code. Okay. अगर आपको simply ये location पे जाके command prompt open करना है, guys, you need to go here and write the CMD. The command prompt will be opening here. और यहाँ पे which command that I'll be having, Java C hello test dot java. Okay. ये मुझे hello test क्यों नहीं आ रहा है? ये यहाँ पे save नहीं हुआ. Sorry, I'm sorry, guys. It is saved at some other location. Save as D. हमारा folder कौन सा है? We are having the infinite.java, hello test.java. And I asked you very simple question, guys. What was that question? Tell me. ये compile होगा क्या code? Now observe very carefully, guys. Very, very carefully. There is something you guys are going to learn for the very first time. And this is the way we have to learn, okay? This is the way we have to learn. Java C hello test.java. Okay, the moment I will hit the enter button, it is going to compile the code. Okay, and everybody must be thinking कि ये code हमें error देगा, but I am telling you guys, this code won't give us any error. This code will compile successfully if the path is set and everything is set properly. Okay, so I am going to hit the enter button, and everybody is just look at the screen. And have you seen, guys, something? आपने कुछ देखा, कुछ हुआ screen पे? Have you guys seen something? क्या चीज? screen. Yes. क्या हुआ? टेल मी. पहली बात तो मुझे बताओ, ये कोड कंपाइल हुआ कि नहीं? राइट, कंपाइल सक्सेसफुली. अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये मेरे लैपटॉप में ही ऐसे होगा. नो गाइस, यू कैन ट्राई एट योर लैपटॉप एज वेल. दिस कोड विल कंपाइल फॉर श्योर. मैंने आपसे पूछते समय भी पूछा था कि ये कोड कंपाइल होगा क्या. सो दिस कोड विल कंपाइल फॉर श्योर 100%. बट अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा? Okay, tell me. Will this code execute, guys? This is going to be very interesting, guys. अगर आप मुझे आंसर करते रहोगे, you guys are going to learn very interesting things from me. Okay, अभी मुझे बताओ, ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, ये guys, ये कोड? No. No, sir. No. And your answer is correct, guys. Okay, यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. The moment I'll try to execute this code, ये क्या बोलता है? ये बोलेगा, see, it will ask us to see whenever we will try to execute any code, guys, उसको चाहिए main method. Okay, तो वो क्या बोलेगा? He will try to find the main method here. उसको main method मिलेगा ही नहीं, and he will let us know. ये यहाँ पे error में बता देगा ये main method not found in class hello test. Okay, please define main method as public static void main string array arguments. तो इसका मतलब क्या है? We can compile the source code. और compile करते ही यहाँ पे क्या हुआ, guys? जैसे ही कंपाइल किया, one class file got generated. Okay,
कंपाइल करते ही वन क्लास फाइल गॉट जनरेटेड, और ये क्लास फाइल को क्या बोलते हैं हम? दिस क्लास फाइल इज कॉल्ड एज बाइट कोड. तो जावा बाइट कोड, and this is the one of the major reason guys Java is called as platform independent. So we are going to discuss about platform independency later, but as of now just understand कि जब भी हम जावा कोड को कंपाइल करेंगे तो जावा कोड कंपाइल करते ही क्या होता है गाइस? वन डॉट क्लास फाइल गेट जनरेटेड. अभी ये डॉट क्लास फाइल इफ यू गाइस विल ट्राई टू रीड, उसमें आप रीड नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट इज द बाइट कोड. ये ओपन हो जाएगा इन नोटपैड बट यू गाइस वोंट बी एबल टू रीड इट. ओके, आई विल शो यू बाय ओपनिंग इट. अभी मुझे बताओ कोई रीड कर पा रहा है क्या ये क्या है? So this is not for us, okay? This is for machine guys, okay? This is in machine understandable format. Machine इसको read करेगा and will execute the, okay? तो इसको इसमें मेन मेथड नहीं मिला गाइस, दैट्स व्हाई आवर कोड डिड नॉट गेट एग्जीक्यूट. तो आपको सबको पता चला कि ये पहला जो कोड देखा है दिस वाज इवन वेरी इजी एक्चुअली. कुछ प्रिंट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट व्हेनेवर विल हैविंग अ, so during an interview also they might ask you guys as a fresher if you are going somewhere, okay? So can our class compile without having a main method? So yes. अभी तक आप नो बोल रहे थे बट अभी आपको क्या बोलना है? यस. ओके, अभी मैं एक और एक कोड लिखूंगा गाइस एंड दैट इज गोइंग टू बी अगेन एन इंटरेस्टिंग. क्लास लेट्स से क्लास लेट्स से टेस्ट. सो दिस इज माय क्लास, ओके? एंड एज यू गाइस नो हम जनरली क्या करते हैं? ओके, लेट्स से जस्ट सी हियर वी आर गोइंग. अभी मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ गाइस? अभी मैं क्लास को just tell me anybody's name guys. I will do one thing here. I'll pick a random name here. Let's say here I am picking Aditya's name, okay? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ guys? सेव करते समय test.java नहीं कर रहा हूँ. What am I doing guys? Aditya.java मैं कर रहा हूँ, okay? So you must be thinking what am I doing? What's wrong with me? Okay? अभी मुझे पहली चीज बताओ. Okay, I am here again. Okay, Java C Aditya.java. अभी मेरा क्वेश्चन है ये क्लास कंपाइल होगा क्या गाइस? No, sir. ओके No. ओके, नहीं होगा. No. No. क्या रीजन क्या है? नो, टेल मी. सर क्योंकि आपने गलत नाम से Class सेव name किया है, is not क्लास के नेम से सेव नहीं किया. अरे किस एक्चुअली डू वन थिंग गाइस, किसी एक ने बताओ मुझे, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला आपने. सर आपने बताओ. क्लास के नाम से सेव नहीं किया, दूसरे नाम से सेव किया है. अभी जस्ट सी गाइस, द मोमेंट आई विल हिट द एंटर बटन दिस क्लास विल कंपाइल सक्सेसफुली. अभी आपने सी अभी कंपाइल होगा गाइस एंड देन आई विल शो यू. जस्ट सी क्लास कंपाइल हो जाएगा. आई हैव हिट द एंटर बटन हियर एंड व्हाट्स रॉन्ग विद इट? व्हाट, व्हाई इट इज वेटिंग? okay okay, just wait guys, I'll hit the enter button again. Okay, let me hit the enter button again guys. Okay, there is something wrong with this Java C Aditya.java. I have hit the enter button and you guys can see something happen on screen. Compile ho chuka hai na? So why you guys were thinking like this class won't compile? So now you must have realized guys जो आपने Java पढ़ा है that you know Java, right? But there are some things guys that still you need to know. अभी हम कुछ एडवांस पढ़ रहे हैं क्या guys? Tell me, are we learning something advanced? No. Now at least you, there is one thing that you must have realized guys कि जो भी हम क्लास बना रहे हैं उसी क्लास से जावा को प्रोग्राम सेव करना is not the mandatory thing. It is just the recommended thing. Mandatory है क्या जिस क्लास से आप बना रहे हो? अभी देखो यहाँ पे there is one method I am going to write. This will compile, okay? Will compile even if you'll rename it, okay? Even if you will give another name. If you will save by another name, right? आपको पता थी क्या गाइस ये पहले चीज बताओ. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. क्योंकि क्या हो रहा था? सो व्हेनेवर वी वर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट आवर जावा कोड, जेवीएम होता है जेडीके के अंदर. जेवीएम क्या ढूंढ रहा था गाइस? जेडीएम वाज लुकिंग फॉर द मेन मेथड, राइट? जेडीएम किसको ढूंढ रहा था? जेवीएम वाज लुकिंग फॉर द मेन मेथड. और कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था गाइस? बिकॉज उसको मेन मेथड मिल ही नहीं रहा था. ओके, सो व्हाट एम आई डूइंग हियर? I'm going to write our very first code guys, and this is the system.out.println,
and here I'll be welcoming you all guys. Okay, welcome to Infianet. Okay, मैंने ये कोड सेव किया है and see whenever you guys will make the code changes, आपको फिर से एक बार कोड कंपाइल करना होता है, क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल बन चुकी है. JVM will execute this डॉट क्लास फाइल. अगर हम फिर से कंपाइल करेंगे तो वो चेंजेस फिर से एक डॉट क्लास फाइल में चले जाएंगे, राइट? देखो, एंड नाउ हाउ कैन आई एग्जीक्यूट द कोड गाइस? अभी क्या लिखना चाहिए मुझे? जावा बताओ, टेल मी. File हाँ, name. which file name? There are 4 file File. names I can see here. Aditya.java. Aditya.java. No, so I told you guys, JVM किसको execute करता है? JVM will always execute the bytecode. तो bytecode का फाइल का नाम क्या है? Test. If I'll execute this code and see here, welcome to Infianet, and you guys have become the Java developers now, right? Okay, so this is the way. आपको ये हमेशा याद रखना है. So JVM will always look for the dot class file, और JVM will always look for the public static void main method. क्योंकि एरर आते समय, एरर में भी उसने क्या बताया था कि मेन मेथड नहीं मिल रहा है. प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज दिस वन. ओके, अभी मुझे बताओ, आप इस मेन मेथड में चेंज कर सकते हो क्या? टेल मी, कैन यू मेक द चेंजेस इन मेन मेथड? सिंपल क्वेश्चन. टेल मी गाइस, आई टोल्ड यू, यू हैव टू कीप ऑन आंसरिंग मी. Yes. ओके, बताओ मुझे कहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ ये मेन मेथड में? टेल मी, where can I make the change in this main method? Have you ever tried guys? किसी ने ट्राई किया? System.out.println में आप जो वेलकम है उसको निकाल कर दूसरा कुछ डाल सकते हो सर. Welcome.infianet को निकाल कर दूसरा डालो कुछ. अच्छा, एग्जैक्टली ये तो हम चेंजेस कर सकते हैं गाइस. ओके, सो लिसन माय क्वेश्चन वेरी केयरफुली. मैं ये पूछ रहा था कि इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या आप? अब बताओ, जो नहीं. पार्ट नहीं. मैंने हाईलाइट किया है, नहीं, इसमें नहीं चाहिए. there is someone is answering. Tell me. Brackets. फक्त माझ्यासाठी हाँ, माझ्या किसी- नजरेत आहे म्हणजे किसी ने सी गाइस, किसी ने बोला कि ये ब्रैकेट हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट? I heard that voice, right? Please guys, तिला mute आजकाल yourself. तिथं आजकालच कळलं लागलं बहिणीकडे हे नव्हतं म्हणून, बहीण आणला नाही हिला म्हणून घरच्या जीवावर बसावं लागतं तिला. हिला गाडी शिकवली नाही कोण, गाडी तर जाऊ दे एक- बाबा, रिक्षा नाही हिला बहिणीला आणायला जायचं. Remove that. आता एक ऊन नाही. Mute him. आता एवढं वाटत Mute नाही. him. I think who's that talking? Okay. Anyway, where were we guys? Okay, so we were there in interesting topic. Okay, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? Then किसी ने बोला कि ये ब्रैकेट यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट ना? क्योंकि मैंने ये यहाँ पे डाला था, करेक्ट? तो ऑब्वियसली Yes. there is change one I am writing here, और मैंने इसको सेव किया है. जैसे मैंने आपको बोला है गाइस, सेव करते ही पहले क्या करना है हमें? कंपाइल करना है. एग्जैक्टली उसके बाद हमें क्या करना है? रन करना है. अभी देखो, चेंज बनाया है यहाँ पे. इट मींस मेन मेथड हमने पहले कैसे लिखा था गाइस, बताओ? यहाँ पे पहले हमने ऐसे लिखा था, और अभी हमने कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है. ये चेंज हम कर सकते हैं, बराबर ना? तो ये कमेंट्स है गाइस, ये कमेंट्स है. आपको, आई होप यू गाइस नो व्हाट आर कमेंट्स, राइट? कमेंट्स वोंट अफेक्ट द कोड. ओके, दिस इज द कमेंट्स आर देयर फॉर द यूजर्स और द डेवलपर्स. एक्चुअली जो भी डेवलप करता है ना कोड, मे बी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी होती है जो मेथड्स के अंदर लिखी होती है. इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दैट फंक्शनैलिटी, आप लिख सकते हो, सो दैट कमेंट वुड बी यूजफुल फॉर अदर डेवलपर, राइट? ओके, अभी मुझे बताओ, इससे ये चेंज छोड़ के कोई और चेंज कर सकते हो आप? बताओ क्या कर सकते हैं? कहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? यहाँ पे, राइट? कहाँ पे कर सकते हैं बताओ? ब्रैकेट के अंदर. और वो एग्जीक्यूट होगा. हैव यू ट्राइड गाइस? अभी दिस वुड बी एन असाइनमेंट फॉर यू. ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारे चेंज दिखा सकता हूँ फॉर श्योर. ओके, अगर आपको एक दो देखने हैं, देन आई विल शो यू. लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, सो दैट इट वुड बी देयर फॉर यू. ओके, एक बेसिक सा चेंज दिखाऊंगा. लेट्स से टेल मी एनीबॉडीज नेम गाइस अगेन. Okay, so there is an Amruta's name here. I'll be using her name. Okay, so let's say
Amruta is developing the Java code and she does not want to use this ARGS. She wants to use her own name. Okay. Have you guys tried this? Will it work, guys? Tell me. चेंज 1 की जगह पे मैं 2 कर रहा हूँ ताकि पता चले कि मेरा जो चेंज किया है वही एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? अभी मैंने अमृता किया है. चलो बताओ मुझे गाइस, ये वर्क करेगा या नहीं? टेल मी. टेल मी गाइस, विल दिस वर्क? Okay, it will 100% work, guys. Even if you will not try, even if you haven't tried so far, no need to worry at all. ये change मतलब ये जो भी method change किया है मैंने वो work करेगा. Okay, let's say अगर आपको और एक change देखना है, then still I'll show you actually. Okay, let's say वो क्या change हो सकता है? I have pasted it here. ये bracket को ही मैं हटा दे रहा हूँ. Simply I am adding here 3 dots. और यहाँ पे मैं 3 डॉट्स डालूंगा ताकि पता चले कि जो चेंज हमने किया है that is working or not. I am going here, I am going to execute my code, compile it first, execute my code, and still my code is working. And you guys must be thinking, why how it is working suddenly in my machine? Is it because of Java 21, guys? No. Okay, so you need to find out the reasons. आपका ये assignment रहेगा. Okay, assignment means, guys, this is not that much important, but still you guys will be curious to learn these things. आपको पता चलेगा कि ये ऐसा ही नहीं होता है. Okay, so syntax है that I know, but you can make so many changes in that as well. अगर मैं public की जगह static लिखूंगा तो चलेगा क्या, guys? क्योंकि let's say यहाँ पे मैं changes कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं public की जगह पे static लिखता हूँ तो ये चलेगा क्या, guys? Tell me. No. How can you say no, guys? Have you ever tried? No. Okay, ये चलेगा, 100% चलेगा. Static public. So this is different here and you have to learn so many things here. Okay, ये चल रहा है कि नहीं? Tell me. चल रहा है ना? अभी मुझे बताओ, मैं main की जगह void लिखूंगा, void की Yes. जगह main, चलेगा क्या? बताओ guys. Tell me, answer me quickly. Answer me No. guys quickly. चलेगा? Yes. Yes. कितने लोगों को लगता है चलेगा? कितने लोगों को लगता है चलेगा? It बताओ won't guys. work. ये main की जगह void और void की जगह main नहीं चलेगा guys. Okay, not allowed. तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? बिकॉज आप चेंज कर सकते हो, लेकिन किस जगह पे चेंज कर सकते हो, दैट आल्सो यू नीड टू टेक केयर गाइस, दैट आल्सो यू नीड टू लर्न. और इसी तरह से आप सीख सकते हो. ये देखो इसको क्या हुआ, इसने कंपाइल तक नहीं किया गाइस. ओके, सो एट कंपाइल टाइम इटसेल्फ वी हैव गॉट एन इशू बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच वी हैव रिटन रॉन्ग, बिकॉज दिस इज ये वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है. ओके, तो आपको ये चीजें समझनी है, सीखना है गाइस. ओके, आर यू गाइस एंजॉयिंग लर्निंग जावा? आपको ये पता था कि पहले? अभी बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ गाइस मैं, बट इट्स अप टू यू. मैं आप पे छोड़ देता हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी चेंजेस यू कैन मेक हियर इन मेन मेथड इटसेल्फ. यहाँ पे जो आपको पहले लग रहा था कि मैं एक भी सिंगल चेंज भी नहीं कर सकता यहाँ पे, इसका मुझे क्या बेनिफिट है आपको ये पता चलेगा गाइस आगे जाके. once you will be good in Java, आप अगर कुछ ज्यादा सीखते हो in Java, that time you guys will realize all these things. Okay, और आपको मैं आज के आज I was supposed to tell you about installing and setting the Java path, right? So ये install हो चुका है guys. Are you guys enjoying? समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. तो ये Yes. see guys, Yes. first of all Yes. installing it is very very easy. Okay, simply आपको डबल क्लिक करना है. Okay, next करते जाओ. Okay, even second standard kid also will install this. Okay, it is really very very easy. Okay, so यहाँ पे next किया मैंने, next किया and it is being installed. जो कि पहले version था guys, 21.0 point something was the version there. अभी ये minor version added हुआ है. Okay, ठीक है. The following application files are need to update by this setup. Okay, मुझे शायद ये close करना पड़ेगा guys. Okay, retry. Okay, so this is really easy guys. I don't know why it is facing the issue. I'm going again with this. Double click on it. Yes. And see, while doing this guys, you might face an issues. No need to worry at all. आपको issues fix करके आगे जाना है.
and this is only the way you guys can learn so many things as a developer here in IT industry. Okay, आपको ये जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा guys, the following applications are using file that need to be updated by this. Close these applications. ये मुझे कुछ, there is something I need to close. Let me just check first of all properly सर installed हुआ है मेरा कि हो नहीं. गया इंस्टॉल। Yes, yes, it is really very easy to install it, guys. Simply आपको double click करके आगे जाना है. In fact, this is the issue I am coming across for the first time. तो कर रहा हूँ मैं. Okay. Error is currently. अभी मैंने location change किया है to install it. Still it is giving me an issue. No need to worry at all, guys. यहाँ पे मैं इसको delete कर रहा हूँ. मैं इंस्टॉल इसको कर रहा हूँ. There is one more JDK available with me. अगर आप भी ऐसा इशू फेस करते हो, still you guys no need to worry at all. आपको फिर से एक बार ट्राई करना है. Okay. The software has already been installed. So reinstall में भी simply यही होगा guys. Automatically close up. Do not close application. Reboot may require. Okay. ये reboot होगा क्या? ओके, सो जैसे ही आप नेक्स्ट करते जाओगे, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और जावा वर्जन चेक करना है. वो नहीं आएगा, आपको पाथ सेट करना पड़ेगा गाइस. ओके, एंड हाउ कैन यू सेट द पाथ, दैट आल्सो आई विल लेट यू नो. ओके, डोंट वरी एट ऑल. आपको समझ आ रहा है सबको गाइस? एवरीवन, आर यू गाइस Yes. अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, yes. Okay, moving ahead Yes, guys, sir. we are going to learn so many things, so many important things. You guys will enjoy a lot. Okay, आपको ये learning enjoy ही करना है actually. Okay, don't think it as a your assignment or your study. Keep enjoying the learning guys. Okay, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे. और जो भी मैंने आपको आपको कल before joining tomorrow's session, you need to find out how many ways are there actually जो आप main method को modify कर सकते हो. Okay, and don't use any AI module guys. Okay, अभी आपका सीखने का time है. Learn by yourself. Try to find out by some resources. Keep experimenting guys. Okay, आपको सीखना है कि जावा क्या है, what are the java's basic features, and I will ask you guys during the session. Okay, because we have 6 weeks and we have so many things to cover. Okay, I have mentioned all those things here, not here, it must be here. Okay, so there are so many things which we are going to cover during the 6 months of time. Close, it is installed guys. अभी path कैसे set करना है I will tell you. Okay, you guys can follow me if you have installed. आप जाओगे in control panel, और there are other ways as well guys. Okay, यहाँ पे system settings दिख रहा है किसी को? system. Okay, यहाँ पे भी जा सकते हो आप. environment, see, edit the system environment variables. यहाँ पे आप जाओ, directly यहाँ पे जाओगे. environment variables पे click करना है आपको. There are 2 ways through which you can configure your path. First thing, you need to configure the Java home. Second thing, you need to configure the path. मैं आपको बताऊंगा what is the reason for both these things. path में जाओ, आपको यहाँ पे Java का path दिख जाएगा और ये path रहेगा bin folder तक, क्योंकि मेरा Java कहाँ पे installed है guys? This C drive, program files, Java और JDK, और यहाँ तक का path आपको लेना है guys. Observe very carefully guys, listen me very carefully. यहाँ तक का path आपको लेना है और आपको इन कैपिटल जावा होम करके ये पाथ सेट करना है. सेकेंड थिंग, उसी के नीचे पाथ करके सी, ये जावा होम किस चीज के लिए गाइस? दिस इज फॉर द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा. ओके, एंड दिस इज फॉर योर मशीन. ओके, दिस इज फॉर योर मशीन को पता चलेगा कि कौन से पाथ पे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बिन डायरेक्टरी का पाथ आप दोगे इसे, एंड दिस इज द पाथ. कहाँ पे पाथ सेट करोगे गाइस? सिंपल, पहले भी किया होगा ना आपने. एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर यहाँ सिस्टम वेरिएबल्स में जाओ. जैसे कि मैंने बोला आपको, जावा होम में आपका पाथ रहेगा ओनली अप टू JDK 21
and inside path there would be a path of the JDK bin up to the bin, right? ये देखो JDK bin का path है, right? बराबर. So guys, will you be able to set the Java path? Java का path set कर पाओगे everyone? Everybody tell me. आप Java का path set कर पाओगे? हाँ सर. Yes. Yes, tell me. सर वो मेरा जो जावा का होम है उसमें पहले से सी फोल्डर में JDK 17.00 का पहले से होस्ट इंस्टॉल है, तो मेरे को पुराना वाला JDK डिलीट करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आप सी इधर यू कैन डू वन थिंग, उसको रिमूव करके ये वाला डाल दो. इट इज वेरी इजी, राइट? और पाथ के केस में कोई भी पाथ रहने दो, आपको सिर्फ पाथ पे क्लिक करना है, ओके? और न्यू करना है. न्यू पे जाओगे तो इट विल अलाउ यू टू ऐड द न्यू पाथ. यहाँ पे जाओ, ये देखो एनवायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे जाओ एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये देखो पाथ. लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे पाथ है. न्यू करो, इट विल अलाउ यू टू ऐड द न्यू पाथ. पाथ करो, ऐड द न्यू पाथ. और इसमें एडिट करो, क्लिक हियर, एडिट इट, न्यू करो. यहाँ से करो, न्यू करो और यहाँ से ऐड करो. और जावा होम का यहाँ पे जाओ. लेट्स से ये मेरा नहीं है, एडिट करो, इसको निकाल दो और आपका डाल दो, राइट? सो दिस इज द set Java path. You can refer this thing as well, okay? Path Java T point. So there was a site actually, I think वो नहीं है क्या अभी? Training.trainings, okay. So set Java path easily you can set guys by referring any doc. आप कुछ भी document use करो, but learn and do it properly. That's what I know. That's what I want. यहाँ से भी जा सकते हो. My computer properties पे जाके सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग, वही पे जाओगे. एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एंड जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू सेट द जावा पाथ. तो दिस पर्टिकुलर लिंक आल्सो यू गाइस कैन रेफर इफ यू वांट टू सेट द जावा पाथ. अभी मुझे ये बात बताओ गाइस, अब तक जो भी हमने कवर किया है, अभी इंटेलिजेंट आइडिया बचा है सिर्फ. Okay, so even if you want to join and download the IntelliJ IDEA guys, simply you need to make a Google request, IntelliJ IDEA download. जो भी पहला JetBrains का साइट आएगा, open that, और ये फ्री वाला रहेगा actually IntelliJ that you need to download. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है. This particular link that you need to use, okay? ये नहीं करना है, ये 30 दिन के लिए फ्री है, बाद में नहीं है. यहाँ पे जो कम्युनिटी एडिशन है ना, कम्युनिटी एडिशन, that you need to download. और कैसे डाउनलोड करोगे? सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा गाइस. सिंपली क्लिक हियर, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग इट. इंस्टॉल कैसे करना है? क्लिक 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 करते जाओ, इट विल गेट इंस्टॉल्ड. ओके, समझ में आया गाइस? ये इंटेलिजेंट आइडिया कैसे डाउनलोड करना है? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? यस. जैसे ये इंटेलिजेंट आइडिया भी डाउनलोड कर सकते हो. अभी ये देखो मेरा वर्जन था 1.1.1, एक कुछ माइनर चेंजेस के साथ. दिस इज द अपडेटेड वर्जन, जस्ट लाइक एवरीबॉडी यूजेस द फोन. और अगर प्ले स्टोर पे कुछ छोटा भी चेंज होता है, देन दे रिलीज द न्यू वर्जन, राइट? इट इज सेम लाइक दैट. The same like that, the new version will install here. Okay, so it will take some time guys. So obviously you can download it as per your convenience, okay? But ये यहाँ पे मुझे नहीं लगता अभी तुरंत डाउनलोड होगा. Okay, अभी मुझे बताओ, आपको समझ में आया आपको क्या क्या करना है कल? You need to learn what is Java. Read करो from any site, go anywhere, okay? और Java features देखना है, okay? Hello world program करना है आपको. Hello world program. And how many ways we can write the? आप मुझे कल कुछ तो ऐसा नया बताओ that I don't know, okay? You need to tell me that guys, okay? How many ways we can modify main method? करोगे guys everybody tomorrow? Yes sir. Okay, these 4 things you need to do guys. Yes, sir. See initially you will feel guys it is quite difficult or something, but once you will start doing it guys, you will enjoy it. Really, I'm telling you, you will really enjoy the journey. You will learn so many things. GitHub पे बहुत मजेदार चीज है.
will be, I'll tell you this thing as well guys, जो भी मैं code लिखूंगा I'll push this code in front of you on this GitHub platform ताकि आपको लिखना ना पड़े, आप खुद से वो कोड, मतलब आप खुद से वो कोड, you can go there on this particular GitHub repository, you can download that code from there. Okay, so बहुत सारी चीजें है guys that you can do, you can learn, और जिस जैसा हमने प्लान किया है that we will follow, we'll complete it. Okay, but I see whichever the 90 minutes that I am going to see invest in you, invest for you guys, you also at least need to spend the 2 hours for the practice daily. अभी अभी आपको थोड़ा सा पता था, इजी भी लग रहा है राइट, पर आगे जाके वंस वी विल स्टार्ट विद द स्प्रिंग बूट राइट, कुछ तो स्प्रिंग बूट का पढ़ेंगे, लेट्स से कुछ तो रहेगा, दैट मस्ट बी डिफिकल्ट, दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स गाइस, डेफिनेटली यू मस्ट डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना ही है, एंड यू नीड टू एंजॉय लर्निंग गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको लगना ही नहीं चाहिए कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ. ओके okay, so tell me guys if you have any doubt in today's session. This was just an introduction session. Okay, I told you about myself first and we started through our agenda. Okay, so for the next 6 weeks I want you guys to be very I want you guys to be very serious, dedicated, and be on time. Okay, be very serious about this. Okay, bring all your things from tomorrow. Okay, I don't want any disturbance. आपके जो भी headphones है or anything that you can bring guys tomorrow, and if you have any doubt you can reach out to me anytime. और एक बात थी, सैटरडे के लिए मैं आपके लिए और टाइम अवेलेबल भी हो सकता हूँ guys. Okay, so Vedanti, do you have any doubt? So if you have any doubt guys, you can ask me. Okay, or else we can wind up today's session and we can discuss. कल क्या डिस्कस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा. Let me just check actually because I have a plan actually. I will go with the plan only. So कल हम देखेंगे कि GitHub को इंस्टॉलेशन करेंगे हम, और ये इंटेलिजे का भी सेटअप करेंगे, एंड आई विल राइट वन कोड इन इंटेलिजे, और कल से हम इंटेलिजे में ही लिखेंगे ना कोड, तो नो नीड टू वरी एट ऑल कि इंटेलिजे कैसे यूज करते हैं क्या. Okay, or we'll start with the Java variables, operators, and control statements. Okay, you guys are going to enjoy the sessions. Don't worry at all about that. आपको जो भी मेरे पास notes होंगे और जो भी code होगा, आपको notebook or anything you no need to carry. But still, if you want to just make some running notes, you can do that. It's your choice, guys. Okay. So tell me, did you guys understand all these things? Yes, sir. Hello? Yes. Tell me. Oh God. See. चालेल. साहेब गेले? See, actually, there is one more thing, guys. आपको कुछ basic etiquettes you have to follow, guys. अगर आप class join करते हो, you have to sit in a quiet place. Make sure you have good internet connection. Make sure you are using headphones, or make sure whenever you are unmuting yourself, कि वहाँ पे कुछ शोर ना हो, ठीक है? Because it is disturbing all the 100 members, guys, because of one member, right? तो आपको ये चीजें हैं जो ध्यान रखना है. And these are the things, guys. अगर आप कोई organization भी join करते हो, there as well you need to take care of all these things. वहाँ पे भी आपको meetings होगी. IntelliJ IDEA आपको ये download करना है, guys, जैसे मैंने आपको बताया. Simply if you'll go and make a Google request, आपको IntelliJ IDEA download का option आएगा. यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो paid वाला है, below that there is an option 3-day style. आपको वो नहीं download करना है क्योंकि उसके 30 दिन के बाद पैसे मांगेगा वो. ये वाला नहीं करना है. You have to do the community edition. IntelliJ IDEA community edition. So many so many shortcut keys. There are so many things we will be learning. Okay. आपको IntelliJ IDEA community edition करना है download, ये वाला. This is free, built on open source, और इतना हमारे लिए sufficient है. In fact, Spring Boot का भी कोड हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है? किसी को और कोई डाउट है? Okay, any doubt, guys? Okay, you can ask me any number of times. I will be there for you. Okay. Saturday का थोड़ा सा ज़्यादा available रहेंगे हम लोग. I will tell you about that. Okay. बाद में बताऊंगा उसके बारे में. Okay, सबको समझ आ रहा है, guys? I want your feedback कि fast हो रहा है, slow हो रहा है. किसी को पता था कोई fast हो गया. ऐसे नहीं लगा ना कि you guys are मतलब थोड़ा fast हो गया. कोई लोग किसी को ये पता था इसलिए कुछ fast हो गया. ऐसे नहीं हुआ ना. Okay, you guys can unmute yourself now and you guys can answer me and about your feedback. Okay,
क्योंकि कल से तो हम लाभ से शुरू हो ही गए हैं, ओके क्या ही बचा है, ठीक है। ओके, इज इट फाइन गाइस जो बीच बीच में आई एम यूजिंग द हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज आई थिंक देयर आर सम Yes, sir. people who might not understand Marathi. That's what I thought. Otherwise Marathi भी use कर सकते हैं, not an issue. मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप बोलोगे as per your convenience, but main चीज क्या है आपको समझना चाहिए, okay? Basically कोई भी language में पढ़ा सकते हैं, not an issue, okay? Okay, But I hope before coming to tomorrow's session, there are a couple of things that you need to revise, guys. और ऐसे ही करना है. Then and then only we can cover all these things in a 6 weeks. And I am telling you one more thing, guys. अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरे को फॉलो नहीं करोगे, let's see if you miss something in one session. I'm telling you guys, you will struggle a lot. मान लो अगर आप 2 दिन मिस करते हो, right after 2 days, 3 days, आपको बाकी के सेशन समझ नहीं आएंगे. I'm telling you that. Okay? So you should not miss even a single session. अगर आपको recording मिल भी रही है, even if you are not getting recordings, still it is not recommended to miss even a single session. I'm telling you that. Be with me. I'm telling you guys, you will learn Java. You will love Java, guys. Okay? और आप Java developer ही बनना चाहोगे बाद में भी. And being a Java developer, just go and research in market, guys, how the Java developers are earning and how Java developers are doing really great in market. Okay? थोड़ा सा difficult लगेगा, but really Java developers के लिए बहुत सारी opportunities भी है, ठीक है? It's your choice obviously later, but you need to learn this, okay? Okay, ठीक है. If you have any doubt, guys, you can ask me. Otherwise, Sadhna, tell me. Hello, Sadhna. Okay, guys, if you have any doubt, आप मुझे frankly पूछ सकते हो. Not an issue, okay? जिसके आंसर करना है, जिसका पता है, I will answer you. Okay, ठीक है, guys. If you don't have anybody does not have any doubt, then we can wind up today's session. Okay, guys. See you tomorrow. About tomorrow's timing, you guys will come to know in group. Okay, in group, somebody will announce you about that. Okay. Okay, guys. See you. Good night. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir.